Okay, students, uh, we have started this chapter, logic gates and sequential circuits. I think we have discussed something on this basic gates we have already discussed. So I'll skip these pages and get OR gate, NOT gate, NAND gate, NOT gate, universal building block through NAND gate or NOR gate. And we have studied these also. XOR. Then after XOR, we're now coming to half adder. Half adder means adding two number means two bit. When you add two bits through the circuit, it's called by a logic gate. This logic gate is called हाफ एडर. हाफ एडर में क्या होता है, कैरी जो है उसको लिया नहीं जाता है, जस्ट वी लिव द कैरी एंड दिस इज द योर सर्किट. This is nothing but your, so it will just last slide, this is XOR. तो XOR का आउटपुट ऐसा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा 0 1 1 0. okay, when both are 0 it is 0. when 0 1 में भी 0 1 में ये 1 है, 1 0 में भी 1 0 में भी 1 है एंड 1 1 में 0 है. ये द और XOR का आउटपुट. So we'll see now the half adder. This is a combination of circuit to add two bits with sum and carry. इसमें दो इनपुट है A and B, दो आउटपुट है. ओके, पहले इतने में जो देखा हमने उसमें दो इनपुट था, एक आउटपुट था. पर हेयर दो इनपुट है, दो आउटपुट है. Now what is this? You see, possible value of AB. This is a possible value, you know. Sum is 0 plus 0 is 0. 0 and 0 means 1. 1 0, 1 plus 0 means 1. 1 plus 1 means sum is 0, carry is 1. Now carry up to, you are living in half adder. This is a combination of circuit to add two bits with sum and carry. It depends on the inputs at that operation. क्या आप बोलते हैं उसको डिपेंड करता है. The logic operation is this, or sum equal to A XOR B, carry equal to A and B. ये जो carry, see the carry, this two multiplication is 0, this is 0, this is 0, 1 into 1 is 1. So this is, we have put and get here. तो A भी जब इनपुट इधर से आएगा, जब दोनों का वैल्यू 1 होगा तभी ये यहाँ पे 1 मिलेगा, अदरवाइज इन अदर कंडीशन इट विल बी 0 ओनली. एक्चुअली 1 plus 1 बिट दोनों बाइनरी नंबर ऐड किया तो यही होता है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू ये जो होता है उसको इसमें डिपेंडिंग ऑन दैट वी मेड दिस डेवलप दिस सर्किट. बिकॉज वी नो XOR में क्या होता है, 0 0 में 0 होता है, 0 1 में 1 होता है, 1 0 में 1 होता है, 1 1 में 0 होता है. सो दिस द XOR का आउटपुट है, XOR का आउटपुट है एंड AND गेट का ये आउटपुट है, दैट इज. सो ओनली इसमें प्रॉब्लम क्या है, दिस एड्स टू बाइनरी डिजिट विदाउट कैरी. See, this logic gate has no memory. Okay, that's why this type of circuit is called combinational circuits. This is called combinational circuits. When there is a memory concept comes, then it's called sequential circuits. That we'll see that this is when this is over. Okay, this is okay. This is your half adder. These are circuit XOR and AND gate.
एंड दिस इज द ट्रूथ टेबल। बट इसमें एक ही प्रॉब्लम है, ये हम कैरी का कुछ बंदोबस्त नहीं किया, बिकॉज हमने दो इनपुट है ना, और जब दो इनपुट है हम तीसरे इनपुट लेंगे कैसे? तो हमको कुछ रास्ता निकलना पड़ेगा, यहाँ पे तीन इनपुट लिया जाता है, तीन इनपुट लिया जाता है, दो आउटपुट होता है, ऐसे कुछ निकलना पड़ेगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्या है, दैट इज द नेक्स्ट इज सेम व्हाट वी एक्सपेक्टेड। तीन इनपुट चाहिए हमको, दो आउटपुट चाहिए, कैरी को लिया गया है, ये सिर्फ ए भी नहीं है, सी भी लिया गया, बिकॉज जो कैरी होता है उसको लिया जाता है, इसको बोलता है फुल एडर। दिस इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट टू ऐड थ्री बिट्स विद सम एंड कैरी। सम भी आता है, कैरी भी होता है। लॉजिक इक्वेशन इज सम इक्वल टू ए XOR B XOR C एंड कैरी इज ए बी एस प्लस ए सी प्लस। देखो होता क्या है, तो व्हेन यू थ्री डिजिट ऐड किया तो उसको सम जीरो, ओके, ये तीनों ऐड किया तो सम इज वन, इसको भी सम वन, ये तीनों वन प्लस वन जब ऐड किया सम इज जीरो बट कैरी इज वन, कैरी इज वन है, यहाँ पे कैरी नहीं है। then 1 plus 1 you same thing, 0 is the sum and carry is 1, यहाँ पे 0 is the sum, carry is 1, यहाँ पे क्या है 1 is the sum, 1 is carry। ये जो आउटपुट है ये हमको ये कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हमने इसमें तीन इनपुट दे दिया। यू सी द इफ यू कंसीडर दिस फर्स्ट ए एंड बी, ए एंड बी का जो ए एंड बी का जो ए एंड बी है, so let us consider this first, some sum, this is actually carry, hold on, something's wrong, no, I think this is okay. So you see when you add three input, उसको जो sum है, I think this will be sum, there's a confusion, this must be sum, so this is sum. So when you add this three bit, we get the through this XOR circuit we get the sum, and we through and circuit in your half adder we can see half adder we got A XOR B for 2 bit and AB is the carry. Similarly when 3 bits are there, this is the sum, this is the carry. So for AB के लिए A dot B, see if these two inputs are given, that is A dot B. Similarly if A and C are taken, that is A dot C, and then B and when B is taken here, B is taken where? This is B. B is taken here and C is taken here. So B and C. B and C. So these are the then AB, AC and BC मिला के तीनों add करके जिससे because इसे OR get, we get the carry like this, and by XOR we get this A XOR B XOR C. This is called full adder. Is okay. Okay. So as long as we are up to full adder, we have studied all कॉम्बिनेशनल सर्किट। यहाँ पे कोई मेमोरी करके कोई एलिमेंट नहीं है, जो इनपुट आया इंस्टेंट आउटपुट निकल गया, यहाँ पे कोई स्टोर नहीं हुआ, यहाँ पे कोई मेमोरी से कोई इनपुट दिया नहीं गया यहाँ पे इस सर्किट पे। जब कोई मेमोरी से कुछ इनपुट दिया जाएगा along with the instant value, that type of circuits are called sequential circuits that we'll see next. Yeah, this is sequential circuit. What is sequential circuit? Half adder and full adder are combinational logic. Output at any instant depend on the inputs at that instant, does not depend on previous result. वहाँ पे कोई previous result नहीं था, मेमोरी नहीं था। previous result मतलब मेमोरी सम आया, it was not there। कोई टाइम इंस्टेंट में जो इनपुट दिया गया उसका आउटपुट निकलता है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। But in sequential circuit, output at any instant depends on the inputs at that instant plus past result. So this circuit consists of memory to store previous result of inputs. So what is happening here in sequential circuit?
वो तो इनपुट दे दिया, गिवन इंस्टेंट इनपुट गिवन, बट उसके साथ कोई सेकंड टाइम जो इनपुट सेकंड टाइम दिया जाएगा, वो जो पहले टाइम का जो इनपुट्स है, वो जो स्टोरेज है हमारे स्टोर्ड, दैट आल्सो विल बी टेकन in the circuit. Means you will give inputs plus you will give some bit of some pulse from the memory. That type of circuits are called sequential circuits. The memory element stored digital binary is called flip flop. तो जो स्टोर किया जाता है मेमोरी से जो आता है कि दैट इज फ्लिप फ्लॉप. व्हाट इज दैट फ्लिप फ्लॉप? इज द फ्लिप फ्लॉप. See, before you go for flip flop, one more thing I think I should tell you. This is called latch. This portion. That means when one input is given, then there is a AND gate and this is another input. यहाँ पे इसका जो आउटपुट है हमने इसको इस गेट को दे दिया, इसका फर्स्ट गेट का जो आउटपुट है हम लोग सेकंड गेट को दे दिया. ये दिस टाइप इतना जो पोर्शन है, आई मीन हाफ पोर्शन ऑफ दिस दे आर कॉल्ड लैच. तो लैच के साथ हमने कुछ एडिशन कर दिया, दो मोड एंड गेट अटैच कर दिया, सो इट इज बिकम नाउ इट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो एंड गेट है, चार एंड गेट है. इसको एसआर फ्लिप फ्लॉप इसको बोलते हैं. एस इनपुट इज सेट रिसेट. सो दिस इज द सेट रिसेट and the clock, because clock is clock pulse will be there, otherwise काम ही नहीं करेगा ना. तो clock pulse also will be considered while evaluating this output. What happens if you see at any instant, suppose nth instant, inputs are given. So Sn and Rn. Sn value is this, Rn value is this. So ये जो ट्रूथ टेबल है Sn का वैल्यू और उसका जो नेक्स्ट वैल्यू आएगा Q, the outputs are called Q are the outputs. Q जो फर्स्ट वैल्यू रहेगा S1 R1, उसका वैल्यू जो नेक्स्ट जो आउटपुट रहेगा दैट इज Q, दैट विल बी Q2. अब S2 R2 का आउटपुट होगा Q3. सिमिलरली Sn एंड Rn का आउटपुट जो होगा दैट विल बी Qn plus 1, n plus 1. So if this is the circuit of the, this is called circuit of flip flop, SR flip flop, S are the inputs. Okay. Now you have to see how it works. This is the result. You see when your S equal to, let's see the value 0 0, when both are 0 0, 0 0 0 1 1 0, yeah, if it is 0 0, then S equal to 0, R equal to 0. When S equal to 0, if it's clock always you have to take 1. Okay. So S equal to 0 and it is 1. So 0 1 means 0. Uska complement. That is, it will become 1. Okay. This will become 1. Now, if for the time you will forget reset and clear. It will just separate. तो इट विल रिसेट एंड क्लियर छोड़ दिया तो ये दो इनपुट हो गया. इसमें आया पहले 1 आया, यहां से आया क्यू बार, क्यू बार आया. 1 into Q bar is the AND gate, that is Q bar only, उसका complement Q. So that means for nth स्टेप में जो Qn plus 1 का वैल्यू होगा Qn. ओके. nth स्टैंड में Qn प्लस का वैल्यू जो मतलब प्रीवियस वैल्यू रहेगा उसका, इट विल बी ओल्ड वैल्यू. आउटपुट आर सेम.
Now suppose you put 0 here. What happens? If you put 0 here, 0 and 1. 0 and 1 means 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, 1 के साथ एक q आ गया, 1 into q, that is q, उसका कॉम्प्लीमेंट q मीन्स उसका रिजल्ट कुछ चेंज नहीं हो जाता. बट 0 0 केस में n plus 1 का वैल्यू सेम. Let us see the when it is 1 0. I made a table. I think the next it is that when it is 0 0, clock is 1, qn plus 1 is a qn, the old value, and complement of qn plus 1 is complement of qn. So there is no change. There is no change. Qn plus 1 is qn. This is the next one. 1 0. Now see ACN equal to 1. This is also 1. 1 into 1 means 1. So complement means 0. 0 into q bar is 0. उसका complement means 1. So next जो value आएगा, that value will become qn plus 1 value will be 1. Okay. qn plus value will be 1. Let's see उस table में क्या लिखा है. When it is 1 and 0, then qn plus 1 value will be 1. Now what will be the complements value? Complement value is usually not required, but let us see still, let us want to see that you can see that also complement value how it comes. Now that means in this case when r equal to 0, 1, that is 0. So complement 1. Q into 1 means q. So complement q1. That means there is no, you see one more thing. यहाँ पे ना when it is q is qn plus 1 is become 1, then by default you have to not see the qn plus 1 complement का क्या वैल्यू है, उसको complement उसको 0 ही करना पड़ेगा. It make it 0. Okay, so we have done 1 0 में we made complement का वैल्यू हमने 0 कर दिया. This is so that means value is set to 1. It's called set the value of output is 1. What is becoming for 0 1 case? 0 1 case. Sorry. This is the 0 1 case. N equal to 0. This is 0. This is 1. 1 and 0 means 0. This is becoming 1. When this is becoming 1 and this is q bar, qn bar, so that is qn bar. So it's becoming q. So the result is becoming qn. So that means when it is 0 1, when that is 0 1, the value is becoming qn. The 0 1 value is becoming qn. Okay. Now we'll see the complement value क्या होता है, complement का क्या होता है. Zero and now when it's 1, this 1 and 1 is 1, so complement 0. 0 into q, that is 0. उसका complement is 1. So we say qn plus 1 becoming qn, but this and this is becoming 1. Okay, this is becoming 1. इस केस में क्या किया जाता है, इसको रेफरेंस में because this is complement of this, इसको रेफरेंस में इसको 0 किया जाता है. So it will become 0 in case of 0 1 value. Okay, इनको 0 1 वैल्यू qn था, बट इसके रेफरेंस में कॉम्प्लीमेंट्री रेफरेंस में इसको हमने रीसेट कर दिया, इसको 0 किया, तो फाइनल वैल्यू इज 0. तो 0 0 में qn is qn, नो चेंज. 0 1 में it is 0, 1 0 में it is 0. 1 0 में this is value is plus 1, result is 1. This is the next one.
when both are 1. When it is 1, 1 is 1, complement is 0, 0 into this is 0, so this become 1. Similarly, this into this means 1, complement is 0, 0 into this is 0, that is 1, so result is coming 1. Both the result is coming 1. When both are 1, then both results are coming 1. But because 1 is complement of other, we cannot accept this value, so not accepted state. इसको बोलते हैं नॉट एक्सेप्टेड स्टेट. इसे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट नहीं है. ठीक है. दिस इज द सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप. इसे ट्रूथ टेबल से हमने देखा कैसे काम कर रहा है. सो इसका दिस इज द डायग्राम ऑफ द रिसेट फ्लिप फ्लॉप. दिस इज द रिसेट ट्रूथ. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट और बेसिक सिक्वेंशियल सर्किट का डायग्राम है ये. यहाँ पे स्टोरेज किया जाता है डाटा ऑन बिट स्टोर किया जाता है. R is a click, reset set is a flip flop, Q and Q bar is the output. सिंबलिकली इसको ऐसे लिखा जाता है. This is another even interesting flip flop, JK flip flop. This is nothing but your SR flip flop. But यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इनपुट एडिशनल इनपुट लिया गया. SR flip flop में क्या था, यहाँ A एंट्री था, S था, यहाँ पे R था, क्लॉक था. पर यहाँ पे क्या हुआ, ये आउटपुट जो है उसको यहाँ पे लिया गया. जो G2 गेट का जो आउटपुट है उसको हमने G3 में लिया, और G1 गेट का जो आउटपुट है हमने G4 में लिया. इज द मतलब मॉडिफाइड और advanced version of SR flip flop. These are called JK flip flop. So this is a J, this is K. तो इसमें क्या हुआ, इसमें what is happening, हमारा जो इस टेबल आउटपुट ऑफ द SR टेबल जो था, let's see what is the output of SR table. Output of SR table was Qn 1 0, and this is a non-acceptable value. Qn plus 1 was Qn previous value, no change मतलब. Then this is 1, this is 0, and this is non-acceptable value. Use the SR flip flop. ये जो non-acceptable value है इसको हमको यूज करना है, इसलिए JK फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया गया. उस ड्रेस से उसमें क्या होगा, Qn तो रहेगा, 1 भी रहेगा, आउटपुट में 0 भी रहेगा, इसमें Qn बार जाएगा. लेट्स सी कैसे हाउ इट कम्स. Yeah. So what is happening here? Qn but the value is no change. Then this became 1, this became 0, and this is Qn bar. So what is the difference is that ये जो इसका जो आउटपुट है that we have given here, यहाँ तो है पहले as it is, इधर भी आया है, इसका आउटपुट भी G4 में गया है. We'll see the how it works. Okay. This is the analysis. Okay. Just I'll try to explain. Easy. Let's see the value. These are the possible values of JK. Okay, JK flip flop possible values है. क्या क्या हो सकता है? When both are 0. Let's see when both are 0, what happens? One thing that clock you have to consider always 1. Otherwise ये सर्किट काम ही नहीं करेगा. तो इसको हम 1 वैल्यू ले लेंगे. So when it is 0 and this is also 0, what happens? This is 0. So anything comes here, that will be 0 only.
This is the AND gate. So the 0 only. So this value will become 1. Again we will forget for reset and clear. So this will become 1. यहाँ पे 1 आ गया. This value is q bar, q complement. 1 into q complement means q complement. उसका invert मतलब उसका complement means q. So qn plus value will be qn. There is no issue. So हम qn plus 1 complement देखने का जरूरत नहीं है. हमको इंटरेस्टेड इन दिस qn plus 1 वैल्यू के इंटरेस्टेड है. तो हमने देखा इसमें नो चेंज. Value has no change. This just like SR flip flop. Now it this becomes 1. What is happening here? 1 into 1 1, and this is coming q bar. So this is becoming q bar. Q bar का complement is q. यहाँ पे q आ गया. यहाँ पे q bar आ गया. q to q bar means 1. 1 it is become 0. So this is become 0. Let us see how it becomes 0. When it is 1 value, this is when it is 1 value. I think let us check again. When value is 1, what happens? When value is 1 here, 1 into 1 is 1. 1 into q bar. So the output of this is q bar, but because of bubble here, it will become q here. So q is value here, and यहाँ से आ गया q bar. Q bar and q will become 0. Multiplication q bar and q is 0, and 0 का जो complement है, it is becoming 1. So when it is 1 0, then output is n plus 1 is 1. Okay, this output we got. And let us see now when it is 0 1, when chain is 0. When this is 0, then this is whatever the input is coming, it is 0 only. It is an AND gate, so multiplication is 0 only. So complement is 1. 1 will come here, and यहाँ से जाएगा q bar. 1 into q bar means q bar only. So output is q. So output will be q. Okay. यहाँ पे because it is q, रिजल्ट आया नहीं है, हमको उसका कॉम्प्लीमेंट में क्या है देखना है. कॉम्प्लीमेंट में क्या आया? 0 1 में when it is 1, k equal to 1, 1 into 1 is 1, then g is coming, q is coming. So this is q. 1 into 1 into q means q. उसका q बार हो गया. तो q bar has come here. यहाँ से आया q. q bar and q is 0. 0 का कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1. It has become now, when it is 0 1, these values become कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू हो गया 1. ऐसे कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू हो गया 1, बट इसका वैल्यू हो गया qn. So there's a confusion. So इसे with this reference we'll make, because this is 1, this is and this is the complement, so we'll make it 0. So we made it 0. Okay, sometimes because we are interested in the value of qn plus 1, ये सीधा आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका इसका रेफरेंस में हम उसको वैल्यू सेट कर देंगे. तो हमने इसको हमने वैल्यू सेट कर दिया 0 1 में. इसको जो वैल्यू था qn उसको हम रिसेट कर दिया. So it has become now 0. Now it has become 0. Now in case of 1 1, in our this case, SR case, we have not accepted that output, not identified कर दिया ना, उसको not acceptable value था. Here what is happening, both are 1. इसके j के flip flop इसलिए बनाए गए just that we get the value,
कैन यूज दिस पोर्ट. दिस पोर्ट हैज टू यूज करना है. if both are 1, then let's see what happens when both are 1. When this is 1, your j is 1, then what is it becoming? This qn plus 1 value is coming 1. Okay, j जब 1 होता है, qn value is coming 1. And when this value is coming, uh, when kn is 1, so kn is 1, this is 1 into 1, 1, and q is coming from where? This is q, this is q bar. So q bar into q, that is 0. So complement means this is 1. So it is becoming 1. So it is becoming 1, and this is also becoming 1. That is not acceptable. So what we do, we first send this value. We take the output of this value first. So what we will do first, we will take one here. 1 into 1 is 1. Then q value is coming. ये जो value 1 आ गया, complement का value. That complement value will take input here. So what we'll do, instead of q bar, we'll take the 1 is the input here. So what we'll do here, if it is 1 into q, no sorry, q bar. So it's what we are getting, 1 into 1 into q bar means that is q bar. उसका जो complement है that is q. q ले लिया और यहाँ से हमने इसका आउटपुट ले लिया, 1 ले लिया. q and 1 means that is q. Complement is q bar. So if we take this value 1 instead of q bar, we get the value of this output as complement. That means qn plus 1 का complement जो previous value है उसका complement यहाँ मिल जाएगा. So this is called, sometimes it is called toggle switch, because एक बार qn मिलता है आउटपुट में, एक बार qn का complement मिलता है. When both are 0, we get there is no change condition. When both are 1, we get the toggle. That means either this or that, two values are there. उसका complement मिलता है. So थोड़ा सा this is the your you have to understand bit, study it again. You will understand this how this is become complement of this. This is the JK flip flop. I think I have given a table for analyzing this. Yeah, the JK flip flop. This table. When both are 0, final output is 0. I mean no change. Even when 0 1, this is reset. When 1 0, value is set. When 1 1, this is toggle complement. So this is when this is complement. Okay, these are JK flip flop. This is D flip flop. See what happened. This is, you see, if for this portion, you see, this is a thing but our SR flip flop. SR flip flop ऐसे ही था. यहाँ पे S था, यहाँ पे R था, क्लॉक बीच में था. यहाँ पे ऐसे ही है. क्लॉक हमने यहाँ पे भी दिया, यहाँ पे भी क्लॉक वैल्यू इज 1 only. But before giving this value to the AND gate, NAND gate, SR की जगह में तो हमने एक वैल्यू दे दिया, पर उसका जो आई मीन कॉम्प्लीमेंट करके यहाँ पे दिया. Instead of SR, we have given SR, we have given D value और S वैल्यू दिया. यहाँ पे भी S का कॉम्प्लीमेंट दिया, समथिंग लाइक दैट. ये कॉम्प्लीमेंट किया गया. वन इनपुट इज देयर, डायरेक्टली इट हैज गॉन है, उसको कॉम्प्लीमेंट करके इसको दिया गया. बाकी सब एज इट इज है और एसआर गेट जैसे ही है, एसआर फ्लिप फ्लॉप जैसे है. So this is called D. SR flip flop can be converted to D flip flop by connecting inverter between SNR. तो वही किया हमने, SNR के बीच में इन्वर्टर लगाया. So it is becoming D flip flop.
what is happening here? Whatever input is there, same input is not changed. A circuit, if you see that you just try own the truth table, you can see that inputs values are not changed. Whatever output is here, same output is here. What input is there, output is same. Okay, this is D flip flop. This is a T flip flop. This is again like your JK flip flop. यहाँ पे कोई इन्वर्टर यूज नहीं किया, सीधा बोथ वैल्यू आर सेम, और यहाँ पे बोथ वैल्यू आर सेम. So it is a I mean a modification of your JK flip flop. It's called T flip flop, T type flip flop. We have seen here D flip flop. We have seen what we have seen. जो वैल्यू हमने दिया है, सेम आउटपुट इज देयर. जो इनपुट है वो आउटपुट है. यहाँ पे ऐसे नहीं है. इसको वैल्यू 0, देन Qn plus 1 का वैल्यू Qn, and what is 1 is the complement. This also you can see through your truth table. When input is nth input जो है उसको same input है, when it is 0 this is there no change. 1 also Qn में complement value. This is your T type flip flop. Modification of JK flip flop. So finally, what is happening? Flip flop is nothing but storage area, a memory to store one bit. Okay, we have seen SR flip flop, we have seen T flip flop, we have seen T flip flop, D type flip flop, we have seen JK flip flop. All cases, objective is to store one bit. Okay, let's see what is the next. Next, we will see now. Yeah, this is called shift register. इसमें हम लोग जस्ट बेसिक चीज हमको पता करना है, व्हाट इज ऑल दिस थिंग. Now we have seen that we have told that the flip flop will store one bit in the memory. There is a storage area. वहाँ पे एक bit we can store. Now when you collect a set is I mean when you arrange these bits, I mean arrange these gates, arrange these flip flops in sequence like this. जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे यहाँ से LSB चालू करते हैं, least significant bit से चालू करते हैं. This is most significant bit. So this is flip flop 0, this is flip flop 1, 2 and 3 and 4. So ये जो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप जब इकट्ठे रखते हैं, रजिस्टर इज a group of flip flop which stores group of bits. So a group of flip flops will, because one flip flop stores one bit, so group of flip flop will store group of bits. So suppose we have 3-bit register, we will have 3 bits flop. We need 3 flip flops. But in this particular case, we are using 1 2 3 4 5 flip flop use कर रहा है 5-bit register के लिए. Register means to store the your value. I mean to store the data in binary form. Okay, so these are the 5 flip flops. The group they are. This is called register. This is called register to store the data. Now shift register is a register which moves stored bits. Now ये जो bits है यहाँ पे, suppose हम यहाँ पे bits initially suppose it value are 0, all are 0. Now I want to move some data here. We put the inputs from here one by one. So after each pass, data gets shifted from one flip flop to another. तो यहाँ पे हमने suppose एक data input देते हैं, serial input one by one. Output will go. Suppose ये 0 0 0 0 0 है. Suppose we send now. So we send first initially 1 digit 1. When you see the digit 1 here, तो इसका जो output है शिफ्ट हो जाएगा, इधर 0 है 0 चला जाएगा,
इधर जो जीरो इनिशियल जीरो था जीरो जाएगा सब, एक दो तीन चार में जीरो आ जाएगा, इसमें वन आ जाएगा। ओके, this is a we have D type flip. This is we have what we have done used here. D type flip flop we have used. तो D type flip flop से हमने देखा जो वैल्यू दिया जाता है वही आउटपुट में आता है। So if you see shift one here, यहाँ पे जीरो है, जीरो will go to this side, this flip flop चला जाएगा। यहाँ पे जीरो था, जीरो will shifted है। So it will go one zero 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 zero. Second time suppose again you repeat one, that this one will shift here, that new one will come here, and zero will shift here. It will become 11000। सपोज हम पांचों को वन वन फाइव बिट भेज दिया, वन 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 फाइव वन सिंगल बिट्स है, तो ये सब रजिस्टर में सब फ्लिप फ्लॉप में वन वन हो जाएगा। We send the sixth one, that will go out of this. So now this is called serial input. Serial input, and this is the output. Now output can be parallel. So when serial input is there, it is a parallel output. एक दो चार। So serial input, we can get the parallel output also. When it's serial input, we can get the serial output also. Both way you can do it. Similarly, when we can give parallel input also. By giving parallel input, we can get serial output. By giving parallel input, we can get the parallel output. That means the bits are shifted in the registers. It's called shift registers. And register is nothing but a memory area जहाँ पे मेमोरी इज कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स जहाँ पे बाइनरी बिट्स स्टोर होता है। ओके, दिस इज योर शिफ्ट रजिस्टर्स। नाउ इज काउंटर। This counter is, it counts. It keeps a count how many pulses it has. You can see counter counts of clock pulses. Counter is a group of flip flop which counts pulses. यहाँ पे वही है, a collection of, this is a T type flip flop is used in self register shift register. We have seen D type flip flop used. In T type we are using T type flip flops are used in counter. Counter is a group of flip flop which counts pulses. 3-bit counter has 3 flip flops. Flip flop 1 0 1 2. Okay, these are all JK type, I mean T type flip flops. At any time the decimal equivalent of binary number, this is number of the pulse counted till the time. The pulse you see one thing you see, the pulse are given here is the pulse to be counted. ये जो आउटपुट आया है इसी इसका तो आउटपुट इज दिस आउटपुट हैज कम गिवन एज अ पल्स टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। इसका जो आउटपुट है दैट इज गिवन टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। दिस इज आउटपुट। दिस इज द आउटपुट। व्हाट इज द आउटपुट है? Each pulse, this is the output. So this is the binary number, it will become, this is the binary number, this is the binary number, इसका इक्विवेलेंट जो नंबर आएगा that will be the your number, there is a count value, counter value. JK flip is used for storing bits as well as used for counter. Okay, now we'll see the next. Yeah, this is multiplexer. You see till now we have seen that two inputs, one output, three inputs, one output. यहाँ पे क्या है? Sometimes we have seen two outputs. यहाँ पे multiple inputs are there, n number of inputs, and there is only one output.
then the inputs are given and which यहाँ से ये multiplication function is there, यहाँ से एक output, एक input will go to the output. N inputs are there, यहाँ से only one output will go. Now which output will go out that depends on the select inputs. यहाँ से कौन सा तुमने लिया है उसको पर डिपेंड करेगा. So logic circuit with one output from several inputs, it is not doing any job. Only input से input को हमने select करके यहाँ डाल दिया, output दे दिया. Suppose it is 0 and it is selected, so it will become 0. Suppose it will become, suppose it is 1, then output will be 1. Provided it is selected. Who will select this? Select will be done by this. Selection of one input is based on the selection line inputs. This is the selection line inputs. Number of selections and number of inputs are related. कितना यहाँ पे होगा? Suppose यहाँ पे n inputs है, यहाँ से m lines है, तो to the m equal to n. But n is the number of inputs, n is the number of selection lines. Suppose this is the relation. Suppose you have 3. Suppose you have n equal to suppose 2. समझ लो यहाँ पे 2 inputs है, तो सिलेक्शन लाइन कितना होगा? 2 होने के लिए हमको क्या चाहिए? 1 चाहिए. So it will be only one selection input. Suppose यहाँ पे suppose m equal to 2 means n equal to 4. That means यहाँ पे जब 2 सिलेक्शन लाइन रहेगा, इनपुट रहेगा, 4 इनपुट रहेगा, वो 4 इनपुट में 1 will come out by this selection line. जो आउटपुट है, where output doesn't depend on inputs but on selection line value. ये जो आउटपुट है इसका इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है इसको सिलेक्शन लाइन, उसको कौन सा वैल्यू शिफ्ट हो रहा है उसके ऊपर, सिलेक्शन लाइन के ऊपर. दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर मैक्स. इट इज कॉल्ड n:1. n input, 1 output. n:1 मल्टीप्लेक्सर. डीमल्टीप्लेक्सर इज जस्ट रिवर्स ऑफ द मल्टीप्लेक्सर. यहाँ पे क्या एक इनपुट है, मल्टीपल आउटपुट. पहले मल्टीप्लेक्सर में क्या था? मल्टीपल इनपुट था, एक आउटपुट था. यहाँ पे एक इनपुट है, मल्टीपल आउटपुट है, बट सिलेक्शन इनपुट्स विल बी देयर. जैसे पहले था वैसे रहेगा. We could have performed the reverse operation of Marx. Marx means multiplexer. It accepts single input and distributes over several output. Number of input lines are n and select lines are m when n equal to 2 to the n. Same relation जो पहले हमने देखा था. Output n है and n is the select inputs, then relationship is this. That means suppose you have 2 select lines, you will have 4 outputs. 4 outputs. Input will be 1 only. This is called multiplexer and decoder. Okay. So this is our end of this logic gates and signal circuit. Basic logic gates we have discussed earlier itself. In this section we have discussed mostly on sequential circuits. And for certain sequential circuits you must use or you must use the truth table to get to understand it clearly, to understand it better. Okay, so I'll stop it here now.